हेलो क्लास। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो क्लास। हेलो। हेलो क्लास। आवाज जा रही नहीं जा रही, क्या हो रहा है? हाँ तो हेलो। 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 हेलो क्लास। आर यू एबल टू हेयर मी? हेलो क्लास। हेलो। हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा? तो उनको उनकी आवाज नहीं, मेरी प्रॉब्लम की तो। हेलो क्लास। हेलो। यस सर। बेटा आवाज आ रही है, कोई जवाब तो दे। सब खामोश बैठे हुए, कोई मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लास हो रही है, क्या हो रहा है? आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आवाज आ रही है। कौन बात कर रहा है? हेलो। हेलो। यस सर। कौन बात कर रहा है बेटा? सर आयशा खुर्शीद। और स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। ओके। सर वी आर अभी गोइंग। मेरे अलावा दो और स्टूडेंट हैं बस। क्या लगा, क्या हो गया? ओके, मैं क्या बता सकता हूँ? पता नहीं बेटा, तुम लोग जवाब ही कोई नहीं दे रहे हो, क्या हो रहा है? ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर। पहली बात तो ये कि मे बी आई थिंक दिस इज आवर लास्ट इंटरेक्टिव सेशन एज पर शेड्यूल। जो पुराना शेड्यूल उसके मुताबिक तो यही है, अगर कोई नई चीज़ नहीं हुई तो दिस इज द लास्ट इंटरेक्टिव सेशन। अब जो इसके बाद अगर आपको जो अगर उसमें बाकी बच जाएगा तो आपको फिर उसके पीपीटी और उसके साथ अगर हो सका तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और फ्राइडे तक सारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? अगर आपके पास कोर्स आउटलाइन है, सिलेबस पड़ा हुआ है जो डॉक्टर अफुरत ने शुरू में दिया था, तो उससे चेक कर लेना कि कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गई है। मैंने तो अपने हिसाब से तमाम चीज़ कंप्लीट करा दी, लेकिन आप चेक करके मुझे बता देना, मैसेज कर देना एटलीस्ट कि भाई कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गई है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो देख लेना, वो तो आप लोगों ने मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड that steroid hormones, the estrogens, progesterones, androgens, anabolic androgens, cortisone, hydrocortisone, and aldosterone.
Now we have got the proteinous hormones. In proteinous hormones, we have got insulin and glucagon, vasopressin and oxytocin. Proteinous hormones, we have got insulin, glucagon, vasopressin, and oxytocin. Mind it, we are going to deal with the insulin. लेकिन क्योंकि इंसुलिन का डायरेक्ट ताल्लुक है डायबिटीज से, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट डायबिटीज. मेरा मकसद इसमें बताने का सिर्फ इतना सा है कि हियर आवर फोकस इज द इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन. We are not discussing the different compounds or agents or anti-hyperglycemic agents. We are not discussing those agents which are used in the case of diabetes. Our focus is the insulin, the hormone, and the glucagon, and few other related compounds. Glucose is the main source of energy in our body, as you know. And even more important is that the brain, the only source of energy for the brain is glucose. Only source for the brain is the glucose. In our body, we are going to get the glucose maybe from diet, glycogenolysis. Glycogenolysis क्या चीज है? The glycogen, which is a stored form of glucose, which is stored in the liver and skeletal muscles, that is going to be hydrolyzed in the form of glucose. Gluconeogenesis, synthesis of glucose in our body. Do you know synthesis of glucose? From non-carbohydrates, and from lipid, from amino acids, or from fat, from proteins. This is the process of gluconeogenesis. The plasma glucose levels are maintained by two hormones. They are controlled by two hormones. One is insulin, that reduces the levels of glucose in the bloodstream when the blood glucose level is high, hyperglycemic condition. In the hyperglycemic condition, when the levels of glucose in the bloodstream is high. And the other hormone is glucagon, which have got the effect which is quite opposite to this effect. यानी इंसुलिन जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है जब हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है, और ग्लूकागॉन जब शुगर लो होती है, तो ग्लूकागॉन जो है दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस एंड हैव गॉट द स्पेसिफिक एक्शन. Both of these hormones, insulin and glucagon, they are peptide hormones. That's why we are saying proteinous hormones. Proteinous hormones. Both of these hormones are synthesized by the pancreas. They are synthesized from the islet of Langerhans, but both of them have got different biological activity or opposite biological activity. The beta cells of Langerhans are going to synthesize insulin, and the alpha cells of Langerhans
are going to synthesize glucagon, while we have got other hormones which are also secreted from the pancreas, even from the beta cells. Amylin is secreted. Amylin is another hormone which is secreted from the beta cells of pancreas, and that is also secreted in the response of food intake after the consumption of food, and that will also play a role in maintenance of sugar level after the food consumption, food intake. But we are not dealing with that amylin. We are interested at the moment in insulin and glucagon, only insulin and glucagon. वैसे तो आप देखो तो somatostatin hormones, they are also synthesized from the pancreas. We have got at least four or five types of somatostatins, and one or two are directly involved with the release or inhibition of insulin or glucagon. But still we are not considering that one. Because in our syllabus we have got only these two hormones related to this one. Insulin is produced and also stored in vesicles in the pancreatic beta cells. This is the mechanism when the plasma glucose increases. जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है upon food consumption, the glucose is taken by beta cells. Beta cells तक कौन पहुंचा रहे हैं? Glucose transporter protein 2. Glucose transporter protein 2, they are responsible to carry the glucose to the beta cell. When they reaches in the beta cell, a number of metabolic processes are initiated. Glycolysis. The product of this is ATP. The product of this is ATP. बेटा जुमला सही कर लेना, ये जुमला सही नहीं बना अभी देखूंगा, आपको भेजने से पहले कोशिश करूंगा कि जो करेक्शंस हैं वो हो जाएं, ठीक है? एंड इंक्रीज ऑफ एटीपी कंसंट्रेशन, बस या तो यहाँ पे इतना खत्म हो जाए या फिर एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, दोनों चीज एक साथ, ये जुमला सही नहीं, ठीक है? बस देख लेना, बस एटीपी कंसंट्रेशन काफी है, इसको अगर डिलीट कर दें तो भी काफी. This increase in ATP closes the ATP dependent potassium channels. Potassium channels को close करेंगे, which depolarize the membranes and result in entry of the calciums. Calcium is allowed to enter into the cells. This calcium is responsible to trigger the migration of the insulin. यानी जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया खाना खाने के बाद, तो वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के जरिए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के जरिए वो बीटा सेल्स में पहुंचेंगे. बीटा सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाएगी. आपने साइकिल पढ़ी होगी, और यहाँ पर एटीपी विल बी प्रोड्यूस. एटीपी जब बढ़ जाएगा तो वो एटीपी डिपेंडेंट चैनल्स जो है पोटेशियम चैनल्स, उनको क्लोज करेगा. उसका नतीजा क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स.
which allow the calcium to enter the cells. This calcium will trigger the mechanism, or they trigger the insulin from the vesicles to the membrane and the release of insulin. यहाँ पे भी एक इंसुलिन जो है यहाँ पे दो फेजेस में रिलीज होती है. द फर्स्ट फेज इज अ ब्रीफ स्पाइक जस्ट फॉर 10 मिनट्स. उसके बाद एक सेकंड फेज शुरू होता है जो मैक्सिमम विद इन 2 to 3 आवर्स और 2 to 4 आवर्स. इसीलिए आमतौर पर जो आप देखते हो शुगर अगर नोट कर रहे होते हैं तो फास्टिंग में कर रहे होते हैं या खाने के 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द मील. यानी देखना होता है कि फिर उसमें इंसुलिन रिलीज हो गई, उसना कोई असर किया, क्योंकि 2 to 3 आवर्स और 2 to 4 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन. ये जो सिक्रीशन हो रही है इंसुलिन की, ये किससे स्टिमुलेट हो रही है? ग्लूकोज से. इसको हम कहते हैं ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रीशन, GSIS. और ये जो इंसुलिन की रिलीज है, देन इट इज गोइंग टू इनिशिएट a number of metabolic processes in the body. वो सब हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप या तो फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर फार्माकोलॉजी में. वो प्रोसेसेस इनिशिएट करते हैं, होने के बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल लेवल्स ऑफ ग्लूकोज. एज फार एज इंसुलिन इज कंसर्न, in 1889 it was observed that in the experimental animals, वो experimental animals जिनके अंदर पैनक्रियास को रिमूव कर दिया गया था, in those animals the symptoms are developed and those symptoms are quite similar to that of diabetes. वो symptoms कैसे थे जो diabetes के अंदर होते हैं. And again in 21 it was demonstrated that these symptoms can be overcome by a supplementation of the pancreatic extract. उस वक्त हम उसका मैकेनिज्म जानते थे, इंसुलिन ना इंसुलिन को हम समझते थे. हमें सिर्फ ये पता चला 1889 में कि अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के पैनक्रियास को रिमूव कर दिया जाए तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं डेवलप, वो सिम्टम्स डायबिटीज के जैसे रिलेटेड, सिमिलर टू दैट डायबिटीज. फिर उसको फर्दर उसके ऊपर काम होता रहा और 21 में उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि अगर वो जो सिम्टम्स रिमूवल ऑफ पैनक्रियास से पैदा हुए थे, अगेन अगर उन एनिमल्स को पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए, then those symptoms can be removed. We can overcome those symptoms. Nobel Prize was awarded on the above mentioned work. In 1855, the structure was established. Sanger was the name of the scientist. He has established the structure from bovine insulin. Bovine insulin, because insulin is found in human beings as well as pig, dog, cow, and goat. That's why we have got this bovine insulin. The structure was established. ये जो पिग, काव और गोट, डॉग के अंदर और ह्यूमन बींग्स में जो इंसुलिन है, we have got a minor differences in those insulin. Just maybe one amino acid change in chain, one amino acid replacement in chain. For example, insulin, which is a two peptide chain. Chain A consists of 21 amino acids and chain B consists of 30 amino acids.
and these chains are linked by disulfide linkage. चेन ए जो है वो ह्यूमन बीइंग, पिग एंड डॉग एक ही है, कोई चेंज नहीं है. While chain B is identical in cow, pig and goat. That's why for a long time pig insulin and the cow insulin was used to treat the patients. For example, the difference between the human insulin and pig insulin is the presence or absence of this threonine. In human being, threonine is present at the terminal as terminal amino acid. And in pigs, it is alanine. In the human beings, it is threonine, and in pigs, it is alanine. Otherwise, the structure is the same. That's why the insulin was used by human beings. But due to this difference, sometimes we are going to have the allergic reactions. Otherwise, this is used for treatment of diabetes. In our body, insulin is synthesized as proinsulin, which is a single chain consisting of 78 to 86 residues. इसके अंदर 78 to 86 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं. सिंगल चेन होती है, प्रोइंसुलिन कहलाती है. That is going to be broken or that is going to be cleaved by means of number of enzymes. Those are termed as proteolytic enzymes. They are cleaved at arginine 31 and arginine 63. A number of proteolytic enzymes are involved, and one of the enzyme is more important, that is also responsible for breaks of blood clots, that is termed as plasminogen activator. आपने TPA पढ़ा होगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको आप क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइड्राइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज ऑफ इंसुलिन. क्या मकसद हुआ इसका कि जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंजाइम है, दैट इज नॉन सेलेक्टिव. इट इज गोइंग टू hydrolyze different proteins. It is going to dissolve the clot, and it is also going to cleave the insulin. वो क्लॉट भी किस वजह से डिजॉल्व होता है, वही उसके अंदर जो एमिनो एसिड मौजूद है उसको वो ब्रेक करता है और उसको क्लॉट को खत्म कर देता है. और यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, इंसुलिन जो है प्रो इंसुलिन से उसमें क्लीवेज कर रहा है, ब्रेकेज कर रहा है, उसको तोड़ के इंसुलिन में कन्वर्ट कर रहा है. दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री फोए से ली गई है. देखो बेटा, इसमें अगर तुम ये गिनने बैठोगे कि कहाँ पर क्या है, तुम्हारे देखने की बात ये है कि एक लॉन्ग चेन थी, इसके अंदर एक ये चेन आ गई जो 21 एमिनो एसिड्स. ये कहाँ से टूट रही है, ये आर्जिनिन से. 31 यहाँ लिखा आर्जिनिन 31, लेकिन आर्जिनिन जो है वो ये मौजूद 31 पे, 31 ये इसी के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, 31 पर ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तो दूसरा है, लाइसिन है, ग्लाइसिन है और दूसरे हैं. 31 जो है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पे ये इंक्रीज हो रहा है. 20 एमिनो एसिड्स, और ये जो सीरीज में इसको कहते हैं आर्जिनिक 31, और दूसरा ब्रेकेज जो है वो 30 पे हो रहा है. ठीक है, दूसरा ब्रेकेज कहाँ पर हो रहा है, 30 पर हो रहा है. 30 की यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ये आर्जिनिन जो है इसका नंबर उसके अंदर 63 है. ठीक,
तो बेटा 31 ये हो गया, 30 ये हो गए, और एक या दो उसके साथ मिलाकर जो है वो 63। इसका नंबर क्या है? उसका नंबर है आर्जिनिन 63। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें यहाँ पे दो चेन मिल गई। ये जो पूरी एक चेन थी वो ब्रेक हो गई। ब्रेक करने के बाद एक 21 अमीनो एसिड्स की चेन मिल गई, जिसको हमने चेन ए कहा, और एक हमें 30 अमीनो एसिड्स की चेन मिल गई, जिसको हमने चेन बी कहा। और ये दोनों चेन्स जो हैं ये डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए जो है वो लिंक्ड अप है। डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए लिंक्ड अप है। ब्रेकेज कहाँ पर हो रहा है? आर्जिनिन पर हो रहा है। आर्जिनिन। इसके अलावा भी आपने देखा होगा, जो अगर दूसरा कहीं पर ब्रेकेज, और आमतौर पर जो साइट है वो आर्जिनिन, आर्जिनिन लाइसिन, आर्जिनिन के साथ कोई और यहाँ पे शेयर भी हम पड़ता है। यहाँ पर ये ब्रेकेज होता है। फर्स्ट सिंथेटिक इंसुलिन वाज रिपोर्टेड इन 1960। और उस साल और ये 1960 में a number of labs, different labs from different countries, they have reported the synthesis of insulin. उस तरफ से And all of these labs, they synthesize the two chains separately, and then they link by disulfide linkage. जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर दो चेन मौजूद हैं, ऐसी दो चेन अलग अलग सिंथेसाइज की गई और उसको डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए लिंक अप किया गया। प्रोसेस लेंदी था, उसमें कई साल लग गए, एंड स्टिल इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उन एडवांस टेक्निक्स के बावजूद भी एटलीस्ट 200 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस। Now this insulin, the main effect is that if the insulin or deficiency of the insulin is less, we have got the conditions or the disease diabetes 1, 2, and 3, and there are three types of the diabetes. In type 1, insulin is not synthesized, and the only treatment for that one is the insulin. क्योंकि इंसुलिन सिंथेसाइज ही नहीं हो रही है, लिहाजा आपको इंसुलिन बॉडी को बाहर से सप्लीमेंट करनी पड़ती है to overcome the problem or to treat the diabetes. So only this is the course of action. Only the treatment is insulin. In the case of diabetes 2, maybe the deficiency of insulin is there, or maybe the less sensitivity of the tissues to the insulin, impairment of insulin secretion, यानी इंसुलिन मौजूद है, बॉडी सीक्रेट कर रही है, लेकिन उसके अंदर इम्पेयरमेंट है, उसकी क्वांटिटी पूरी नहीं है, डेफिशिएंसी है, या फिर अगर वो मौजूद भी है तो टिश्यूज की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गई। तो those are the reasons for that type 2. And in type 2, we have got a number of compounds or agents which are going to be used to treat that one, the deficiency of the insulin.
एंड इफ दोज एजेंट्स जैसे हमारे पास मौजूद है, सल्फोनाइल यूरिया है, बाइगोनाइड्स हैं, मीटाजोन्स हैं, अगर वो दे आर नॉट able to control that diabetes or hyperglycemic conditions, then maybe in combination insulin is used. And with these or without these compounds, synthetic compounds, we are using the insulin. For the treatment, we have got different targets. ये टारगेट्स हमें कैसे मिले? हमने देखा कि जब ग्लूकोज था, ग्लूकोज के अंदर अगर जो इंटॉलरेंस पैदा हो रही है, या ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, या ग्लूकोज जो है उसके ऊपर जो इंसुलिन का इफेक्ट है, वो साथ साथ और दूसरे जो बॉडी फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे एक्सेलरेटेड लाइपोलिसिस, अगर लिपिड की जो ब्रेकडाउन बढ़ जाए, जो कि मसल में है, लीवर में है, या फैट सेल्स में है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। अभी आपने देखा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जीआईटी ट्रैक्ट, इनक्रेटिन डेफिशिएंसी, incretin, that is incretin that is synthesized in the intestine and also released in response to the food consumption. Then we have got hyperglucagonemia. What does it mean? Hypersecretion of glucagon. Alpha cells are responsible. From that, those alpha cells, they are going to secrete a large amount of glucagon. Hypersecretion of glucagon. ग्लूकागॉन का क्या काम था? अभी बताया कि ग्लूकागॉन जो है अपोजिट है इंसुलिन की एक्शन से। इसका एक्शन, जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो इसको रिलीज होना चाहिए, और रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, मेंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पर वो रिस्पॉन्स जो है वो इरेगुलर हो गया और हाइपर सिक्रेशन है। जब हाइपर सिक्रेशन होगी तो क्या कर रहा है? दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट मीन्स। या फिर एक और, किडनी इंक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, के जो किडनीज हैं, किडनीज ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन उसमें बढ़ते, इज गोइंग टू बी रीअब्जॉर्ब। अभी रिसेंटली वी हैव गॉट few compounds which have got the mechanism or mode of action with these kidneys, or sodium glucose transporter, this type of mechanism। तो ये रिसेंट है, इससे पहले जो आपके पास आमतौर पर ये वाली इंक्रेटिन डेफिशिएंसी, और बल्कि मिक्स कहना चाहिए कि हम ऐसे जिसके अंदर एक या दो एक्शन मौजूद थे जो मिलकर उसको कंट्रोल करते। ब्रेन, ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी कहा था कि टिश्यूज जो है सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, तो वो सेंसिटिविटी टिश्यूज की जो कम है वो रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि देयर आर मल्टी फैक्टोरियल अप्रोचेज, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जिस तरह भी मैंने कहा कि यही टारगेट्स हैं, और इन टारगेट्स के मुताबिक we have synthesized a number of compounds. Although here we are not considering those compounds, we are not discussing those compounds. Type 3 is also known as gestational diabetes. ये during pregnancy develop भी होती है, और आमतौर पर प्रेगनेंसी के साथ ही साथ, प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाती है
तो आफ्टर डिलीवरी इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी खुद ब खुद वो सही होगा। ऑल पेशेंट्स टाइप 1